क्लास 7 साइंस का लेसन नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रॉप। आंसर, पैरासाइट्स, these are the organisms that live on or in the body of another organism host and obtain the food from it. But saprotrophs में these are the organisms that obtain their food from the dead and decaying organic matter. They do not require any host. Second point है, they harm the body of the host. But saprotrophs में they are cleaning agents and are important for the ecosystem. Parasites में इसकी examples है Q.2 amoeba on trees, fleas and ticks that live on dogs and cats are also parasites. But saprotrophs में for example fungi, water molds and some bacteria. थोड़ा सा इसको डिटेल में भी समझ लेते हैं। पैरासाइट्स वह ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं और उसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से फूड प्राप्त करते हैं। पैरासाइट्स होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हार्म करते हैं। पैरासाइट्स के एग्जांपल है Q.2 ऑन ट्री, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं। बट सेप्रोट्रॉप्स वह ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड प्राप्त करते हैं। इनको होस्ट की जरूरत नहीं होती। सेप्रोट्रॉप्स क्लीनिंग एजेंट हैं जो इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स के एग्जांपल है फंजाई, वाटर मोल्ड्स एंड सम बैक्टीरिया। इस क्वेश्चन को अभी आप नोट कर लीजिए। If you like our video, please share and subscribe our channel.